So we are starting with our new chapter. Photosynthesis in higher plant. So we are starting with the section of plant physiology. And इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, that was classical botany. Classical botany means your taxonomy related part. हम लोग classification पढ़ते हैं वो सब. And that is classical botany. Now we are starting with the topic of plant physiology. So photo का मतलब होता है light. Photo means what is there? Light. And synthesis is formation. Synthesis means formation. So there is formation, but not of light, but by the help of light. लाइट का कोई सिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइट बनाई जा रही है, जनरेटर नहीं है लाइट का यहाँ पर, बट लाइट की मदद से हम कुछ बना रहे हैं प्रोडक्ट को, फोटोसिंथेसिस. So now photosynthesis today what we learn, आप लोगों ने एक बेसिक इक्वेशन बहुत पहले से सीखी होगी, कि हमको चाहिए होता है CO2, that is carbon dioxide. So plants accept carbon dioxide, that is CO2. With that they need water. And हम पेड़ों क्या देते हैं, पानी देते हैं. So they need what? Water. And in the presence of pigment chlorophyll and sunlight. In the presence of pigment chlorophyll and the sunlight, there is synthesis of glucose, C6H12O6. With that, water is produced, energy is released. And some water molecules are also produced. So this is our general equation for photosynthesis. Now, if we balance the equation, here we have 1 carbon, here we have 6 carbon. So 6 CO2, 6 H2O. And तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, उधर 6 कार्बन, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 और 6 18. So here 6 oxygen, 6 O2. So 6 CO2 and 6 well. Okay, what is the balance? तो कहने मतलब क्या है कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. And then these are our products. So there is substrate and then there is तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिलता है एटमॉस्फेयर से, वाटर आल्सो इट गेट्स एटमॉस्फेयर थ्रू रेन और mechanically by the supply of human being, and then sunlight is also coming from sun. Chlorophyll is present inside the plant only. और ये चारों चीज यूज करके वो अल्टीमेटली क्या बनाता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर एंड प्रोडक्शन ऑफ सम एनर्जी ड्रिंक्स. तो वो ध्यान से सुनना आप लोग. This mechanism which is going on in the plant is the basis of survival of all living organisms. अगर ये इक्वेशन प्लांट के अंदर से हटा दी जाए तो हम सब मर जाएंगे. Why? Because we don't have any method of production of food. And हमारे खुद के पास खाना बनाने के वास्ते तो कोई मेथड नहीं है. What we are doing, we are just processing the food. हमारे पास खाना ऑलरेडी है और उस खाने को हम प्रोसेसिंग करते हैं किचन के अंदर, फिर उसको कच्चे खाने को पकाते हैं हम लोग, मसाला मिलाते हैं और हम खा लेते हैं, है ना. So what we do, we don't produce food. Actually, we just
process the food. Whatever food we get from plants, that processing is done by the human beings and other organisms. But no organism other than plants have the ability to produce food. There is energy generating molecules. तो जो ग्लूकोज है वो कैसा मॉलिक्यूल है? एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल। यस सर। अगर आप ग्लूकोज को बर्न करोगे आपको बहुत सारी क्या मिलती है? एनर्जी। बोलते ना ग्लूकॉन डी, एनर्जी ड्रिंक है ना, आपको ग्लूकोज से क्या मिलने वाली? एनर्जी मिलने वाली है ना। फैट, फैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ energy. Protein also going to give you a lot of energy. So these are all energy generating molecules जिनसे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दिस एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड हाउ? दैट इज ओनली फ्रॉम द हेल्प ऑफ गैस। यानी यहाँ पे आप देखो तो कोई ऐसा कार्बन का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है। कार्बन का सोर्स क्या प्लांट के लिए? CO2। यानी यहाँ पे जो कार्बन आपको दिख रहा है ग्लूकोज के अंदर, वो कार्बन ग्लूकोज के अंदर कहाँ से आए? CO2 से। तो कैन यू इमेजिन from gas a glucose molecule is produced. CO2 is a, yes or no? CO2 is a gas, and from that gas molecule you are producing a glucose molecule, and that glucose molecule is the basis of our survival. So we generally neglect this molecule gas CO2, like खराब gas है CO2, but this CO2 is the basis of our survival actually. If you see, अगर एटमॉस्फेयर CO2 चले जाए तो प्लांट चले जाएंगे, प्लांट चले तो हम भी चले जाएंगे, because ultimately we are completely dependent on plants for our food. Not only food, if you see, for shelter, for clothing, for many things are dependent on plants. So if plants are gone, our survival also goes. So therefore this reaction is very, very important in the history of science. But in the history of science, this reaction doesn't came just like a कोई चमत्कार नहीं होगा अचानक से किसी को पता चला अच्छा CO2 को मिलाया H2O को मिलाया क्लोरोफिल सनलाइट तो ये बन जाता है। It took a lot of years for scientists to come to this conclusion that by the help of a gas and water molecule in the presence of a pigment, this all things are happening. So there's a long history how all scientists did different experiments, and after those experiments they came to this conclusion कि ultimately ये हमारी रिएक्शन होती है। और इसमें भी जो CO2 है वो बना रहा है आपका ग्लूकोज, और जनरली जो ऑक्सीजन है दैट कम्स फ्रॉम वाटर, है ना। अर्लियर साइंटिस्ट हैड अ मिसकंसेप्शन। साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आता कि ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, वो CO2 से रिलीज होती है कि वाटर से रिलीज होती है। बट वी सी हाउ साइंटिस्ट केम टू दिस कंक्लूजन कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर से। और जो ग्लूकोज के अंदर कार्बन है वो कार्बन कहाँ से आता है? CO2 से। तो थोड़ा सा अगर हम सोचे केमिस्ट्री की भाषा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे CO2 में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। What is lacking here is hydrogen. CO2 में क्या नहीं है? हाइड्रोजन। बट here what we have? हाइड्रोजन। तो बताया कोई CO2 से ग्लूकोज बनना, CO2 से क्या बनना? ग्लूकोज बनना। इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। CO2 से ग्लूकोज बनना इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। हाउ मेनी ऑफ इट से ऑक्सीडेशन? Okay. How many of it say it is reduction reaction? Addition of hydrogen is what? Addition of hydrogen is oxidation. Removal of hydrogen. हाँ तो यहाँ पे CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना भैया, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ। पक्का? हाँ तो आप लोग मेरा वही इतना बड़ा विधेय जनता ऑक्सीडेशन में हाथ खड़ा कर रही और तो क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? यस और नो? एंड देन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल देयर इज सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या रिमूव हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना। H2O में से O2 बना तो क्या रिमूव हो गया? क्या रिमूव हुआ? तो व्हाट इज इट? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? वो केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़ा आप लोगों को? कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। चाहे वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है आपका? रिडॉक्स रिएक्शन। आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म इज सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सारे लिविंग रिएक्शंस होती है बायो मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वो क्या बोलते हैं हम लोग?
metabolism. Sum of all those biochemical reactions is called as metabolism. Now here CO2 H2 का यूज करके आप सिंथेसिस कर रहे हैं किसका, ग्लूकोज का। तो बताइए कैसा प्रोसेस हो गया, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। Who will say what is catabolism and what is anabolism? Bolo, someone raise your hand and say what is catabolism and what is anabolism. बताओ सार्थक, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म मतलब बनना और एनाबॉलिज्म टूटना। ओके, और कोई क्या था देवेश? हाँ, कैटाबॉलिज्म क्या है? बनना, और एनाबॉलिज्म बना टूटना। हर्षद, माइक्रो से माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो। और कोई जल्दी बोलो, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म? क्या है, बोलो बोलो। प्रोडक्ट फॉर्म करना। तो इधर बोलो कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, इधर बोलो कैटाबॉलिज्म मतलब बनना। यही है ना, ये भी सही बोला ना, कैटाबॉलिज्म मतलब बनना बोला ना, है ना? टूट क्या हो जाता है, टूटना। तो इसका अर्थ है राइट, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन ऑफ complex molecule into simpler molecule. Anabolism means formation of complex molecule from simpler molecule. तो CO2 और ग्लूकोज में से कौन आपको सिंपल लग रहा है, CO2 ही ग्लूकोज? CO2 is a simple molecule and glucose is a complex molecule. So formation of glucose is catabolism or anabolism? So photosynthesis is a redox reaction and it is an anabolic process. कैसा प्रोसेस है ये, एनाबॉलिक प्रोसेस। वैसे ग्लूकोज क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंथेसिस हो रहा है। थर्ड, आप लोगों ने एक्सर्गोनिक एंडरगोनिक रिएक्शन पढ़ा आप लोगों ने, वो पढ़ा है, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? अरे जिसको पता है रेज योर हैंड, बताओ सायरा, व्हाट इज एंडोथर्मिक, व्हाट इज किसमें? ओके, एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज है ना। तो इसी के साथ दो और वर्ड है, एक्सर्गोनिक और एंटरगोनिक। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस मींस वेरी एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या, एक्सर्गोनिक। और एंटरगोनिक प्रोसेस वेर यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, क्या एनर्जी का फॉर्मेशन रिलीज हो रही है ना एनर्जी। तो दिस इज एक्सर्गोनिक और एंटरगोनिक, एक्सर्गोनिक। चलो क्या सभी को, वेरी गुड। थ्री टर्म्स यू शुड रिमेंबर, फोटोसिंथेसिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सेकंड, इट इज अ anabolic process, कैसा प्रोसेस है, anabolic, because from simple molecule we are synthesizing complex molecule. And third, it is an exergonic reaction because there is release of energy, है ना, क्लियर हो सभी को? तो हेडिंग आ रही फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, इन प्लांट, इन प्लांट formation, in plant formation of food, that is glucose, that is glucose by the help of light, is a unique reaction, is a unique reaction which sustains the whole world, which sustains, SUSTAIN, sustains the whole world, which sustains the whole world. The reaction is a general reaction of photosynthesis.
तो ये C6H12O6 ये जो बनाया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। हजारों की छुट्टी। रिले रिएक्शन। ये प्लस और इसमें अगर कलर यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें। मन तो वाला बहुत अच्छा था लेकिन देखो फटाफट। फोटोसिंथेसिस इज a redox reaction. It is a redox reaction. Anabolic process. 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 And exergonic reaction. Exergonic. Exergonic. Exergonic reaction. Where glucose is synthesized. Synthesized by the help of CO2 and water. Glucose is synthesized by the help of CO2 and water in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. देखा सभी ने? अब हेडना दे आप लोग हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हेडिंग हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो नाउ ये कैसे हमको पता चला कि प्लांट को CO2 चाहिए होता है? ही रिक्वायर्स सनलाइट, ही रिक्वायर्स वाटर एंड ही रिलीजेस आउट ऑक्सीजन। तो ये सारे कंक्लूजन के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, तो ये हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे कि किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया और फिर कौन उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उसको क्या कंक्लूजन मिला, है ना? तो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहला एक्सपेरिमेंट है मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ध्यान से सुनना सभी को। क्या किया साइंटिस्ट ने? उसने एक लीफ लिया, हिटो का लीफ, एक और लीफ लिया, दूसरे लीफ को पार्शली उसने डिप कर दिया इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। मतलब जो लीफ है वो पार्शली टेस्ट ट्यूब के बाहर है और पार्शियल टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रेजेंट था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। now potassium hydroxide reacts very rapidly with the CO2। किसे रिएक्ट करता है वो? CO2। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया किसके साथ में? एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ। एंड पोटेशियम कार्बोनेट आपको फॉर्म हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये CO2 रिलीज किया रिएक्शन के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जितने भी टेस्ट ट्यूब के अंदर CO2 थी वो सारी की सारी किससे रिएक्ट हो गई? किससे रिएक्ट हो गई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, KOH के साथ। आफ्टर दिस साइंटिस्ट ने दोनों ही लीव्स को बाहर निकाला, आउटसाइड। और दोनों ही लीव के ऊपर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा आयोडीन टेस्ट के बारे में। पढ़ा आप लोगों ने कुछ आयोडीन टेस्ट? तो क्यों करते हैं आयोडीन टेस्ट? हाँ, टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स।
आप लोगों ने आलू भी किया हुआ, आलू को कट करके उसके ऊपर आयोडीन के ड्रॉप डालते हैं, तो आयोडीन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है आयोडीन का, है ना। लेकिन जब वो स्टार से रिएक्ट करता है तो कलर कैसा आता है? ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक कलर रहता है। तो पूरा जो आलू है वो कैसा आता है? वो ब्लैक रहता है। क्यों? क्योंकि आलू के अंदर क्या भरपूर मात्रा में स्टार्च। तो अभी ये लीफ के ऊपर इन्होंने क्या अप्लाई किया? आयोडीन। यहाँ भी क्या अप्लाई किया? आयोडीन। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा? जो लीफ पूरी तरीके से बाहर थी, है ना, इट वॉज नॉट इन साइड द टेस्ट ट्यूब, दैट कंप्लीट लीफ बिकेम bluish black in color because that complete leaf is participating in photosynthesis। और photosynthesis से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है कौन? स्टार्च। तो यहाँ पर ब्लूइश ब्लैक कलर दिखाई दिया, मतलब पूरी लीफ में यहाँ पे किसका सिंथेसिस हुआ है? द होल लीफ इज सिंथेसाइजिंग स्टार्च। पूरी लीफ क्या बना रही है? स्टार्च। लेकिन यहाँ पर जो हाफ लीफ है, that half leaf is only synthesizing starch. The other half leaf is not synthesizing starch. Why? क्योंकि वहां पे कौन अवेलेबल नहीं था? CO2, है ना। ये लीफ का जो आधा पोर्शन टेस्ट के अंदर था, वहां पर CO2 की अवेलेबिलिटी थी क्या? There was no CO2, that all CO2 was taken by potassium hydroxide। और चूंकि CO2 नहीं था, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए आयरन टेस्ट में वहां पे रिजल्ट नहीं दिए। There was no bluish and black color seen because no starch was formed। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कौन बताएगा? व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ? हाँ, प्लांट रिक्वायर CO2 फॉर। वेरी गुड। ट्रॉली हेडिंग बॉल्स हाफ एक्सपेरिमेंट डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम आपको बहुत लिटरली बता रहा हूँ, कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल डायग्राम बनाइए, आपको समझ में आ जाए ऐसा। लेकिन डायग्राम बनते चलेंगे, आपको बहुत समय से बिताना नहीं। What is required in photosynthesis? पेपर के साथ आप लोगों का सैटरडे टेस्ट है।
रिजल्ट क्या है हम लोग? इसका फर्स्ट रैंक है। किसका फर्स्ट रैंक है? वैष्णवी, ओके। सेकंड आर्या। थर्ड, थर्ड रीचल। आज इसी से पेरेंट्स आ रहे हैं। बॉयज और कौन सा पार्ट जूलॉजी का था, पहला कि दूसरा? जूलॉजी का दूसरा था, बॉटनी का पहला था। बाप रे। 141, 130, 115, 113, 111, 119, 18, 13। जूलॉजी बढ़िया लिखा है हम लोग। ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक 100 के नीचे दो ही लोग हैं, एक दो। बढ़िया जूलॉजी पढ़ रहा है हम लोग। सारा पार्टी वाह वाह। बहुत नंबर आ गए। ओ, हर्ष कितने हैं? हर्ष कुमार, बाप रे बाप। सिमन का है, सिमन का है। कौन सा रैंक है सिमन? हमारा कितना देश का है, तुम्हारा नंबर का है? बाप रे बाप, 40। बॉटनी में 24 नंबर है तुमको? क्या था ये, इतना आसान में बनाया था मैंने। इधर हम लोग को डिफिकल्ट लगा था पेपर। हाँ, डिफिकल्ट था बहुत। क्या? अच्छा, फिर ऑप्शन नहीं थे। आप लोग कितने आए थे सेशन रीजन? 10 तो आए थे फिर। बोनस है ना, बोनस है। दिवाली बोनस चल रहा है क्या? बोनस। हाँ, 5 ऑप्शन ही था। हाँ, तो तुमको ऑप्शन पता नहीं होता क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? पागल लोग। पता होते हैं ना फिर। नहीं पता होते, डूब मरो। पता नहीं। चलो, तो बहुत था एक्सपेरिमेंट। सेकंड, जोसेफ डिस्प्ले। आप लोगों को सैटरडे को जो मैंने दिया था, इट वाज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। आपको नीट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये पेपर मैंने आकाश का एक, आकाश के मॉडल में से नहीं है, और आकाश के नहीं, आकाश मॉडल में से चेक कर लो तुम। बहुत अच्छी जगह से मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ दिए थे, एंड यार आपको तो लगा पेपर एनसीईआरटी से बाहर से था। पूरा पेपर एनसीईआरटी से था, है कि नहीं? एक लाइन में से क्वेश्चन था। तो पेपर आपको ऐसे ही आने वाला है, एवरी सैटरडे। फॉर व्हाट? हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट इज जोसेफ प्रिस्ले। तो ये जोसेफ प्रिस्ले साइंटिस्ट के घर पे लाइट चली गई थी एक बार, और उसके घर में चूहा था। तो पहले तो मोमबत्ती जलाई, फिर लाइट चली गई थी। तो
लोग आपके से पागल साइंटिस्ट बेटा हो क्या हो मतलब तुम पागल हो साइंटिस्ट पागल नहीं है तो जोसेफ पिटने का लाड़ी गई थी उसने बत्ती मोमबत्ती जलाई एक चूहा घूम रहा था वो चूहे को पिंजरे के अंदर पैक किया थोड़े समय के बाद है ना दिस इज योर माउस तो ये चूहे को से बंद कर दिया अब थोड़े समय बाद क्या हुआ चूहा मर गया और जो मोमबत्ती वो भी क्या हो गई बुझ गई उसको दुख हुआ बोले कि अगली बार जो लाइट जाएगी तो हम चूहे को मारेंगे नहीं तो अगली बार फिर से लाइट गई उसने मोमबत्ती जलाई चूहे को अंदर पैक किया लेकिन साथ में क्या रख दिया उसने प्लांट और जब नेक्स्ट टाइम उसने मोमबत्ती जला के प्लांट और साथ में चूहा रखा तो ना चूहा मरा और ना मोमबत्ती बुझी तो ये सर्वाइड कितने किसी जान में चली चूहे की जान में चली और तुझे परेशानी भी नहीं क्या मतलब क्या है जब चूहा और मोमबत्ती दोनों साथ में थे तो कैंडल में कंबशन हो रहा है क्या हो रहा है कैंडल में कंबशन कंबशन के दो ही प्रोडक्ट्स होते हैं व्हाट आर दे CO2 एंड H2O तो कंबशन यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा था CO2 यस और नो माउस और माइस इज एन एनिमल है ना चूहा क्या है जानवर है और जानवर क्या लेते हैं they intake oxygen and they release CO2 so this mice was also releasing CO2 and both were needing what and a combustion also requires oxygen लेकिन चूंकि दोनों ऑक्सीजन चाहिए थी और दोनों ही क्या रिलीज कर रहे थे CO2 एक टाइम में जब ऑक्सीजन का जो लेवल था वो क्या हो गया बहुत कम हो गया ऑक्सीजन का लेवल जैसे कम हुआ डिग्रेडेशन इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन कॉजेस ये जो कैंडल हो क्या होती है बुझ जाती है वैनिशिंग ऑफ द कैंडल एंड डेथ ऑफ द माइस माइस भी बुझ जाएगा और कैंडल भी क्या हो जाएगी बुझ जाएगी लेकिन जब लेकिन जब आप प्लांट रखोगे तो प्लांट इज रिलीजिंग व्हाट oxygen. Candle is releasing what? That is taken by plant. Mice is releasing CO2 and plant is giving oxygen to the mice. Yes, Sabiko? So now there is an exchange of CO2 and O2 between plants and mice. So therefore mice भी सर्वाइव कर जाता है और जो कैंडल वो भी जिंदा रहता है सभी को तो यहाँ से जोसेफ प्रिस्टन ने बताया इन 1774 he discovered the oxygen है ना ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी जोसेफ प्रिस्टन ने कौन से साल में 1774 इन 1774 जोसेफ प्रिस्टन ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की और उसने बोला कि प्लांट रिलीजेस व्हाट ऑक्सीजन और प्लांट कर रहे हैं कौन सी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस तो प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड दे आर टेकिंग व्हाट CO2 क्या था सभी को वेरी गुड हेड डालिए जोसेफ प्रिस्टन डायग्राम बना सकते हैं नहीं बना सकते लिखिए सीधा इन फर्स्ट सेटअप ये पहला सेटअप है ना इन फर्स्ट सेटअप इन द बेल जार है ना बेल जार समझते हैं आप लोग जैसे बेल शेप का जार उसको बोलते हैं हम लोग क्या बेल जार और ग्लास जार बोलते हैं उसको ग्लास का बना होता है इसीलिए बोलते हैं ग्लास जार बेल शेप का होता है इसीलिए बेल जार और कांच का बना होता है इसलिए ग्लास जार तो इन फर्स्ट सेटअप इन बेल जार और ग्लास जार कैंडल एंड माइस वाज प्रेजेंट है ना कौन प्रेजेंट था कैंडल और माइस कैंडल एंड माइस वाज प्रेजेंट in due course of time in due course of time थोड़े समय में in due course of time in due course of time mice died mice 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 died mice मर गया in due course of time mice died and candle what is English
candle gets extinguished and candle gets extinguished. Extinguish गायब हो जाना या बुझ जाना. Candle gets extinguished. ये आदमी क्या लिखते हैं? In bell jar or glass jar, candle and mice were present. In the due course of time, mice died and candle got extinguished. Because both were releasing CO2. हाँ, दोनों क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2. मुझे लिखी नहीं है. हाँ, तो रात में लिखो बेटा. कोई भी रोज नहीं. तो ऐसे कैसे आ जाते हैं तुम भी और से? आज तो पेपर है हम लोग. हाँ, एग्जाम था. सबको नोटिस आएगा ना पोस्टपोन कर. कितने बजे आता नोटिस? कब 8:30? तो तुमने देखा नहीं मैंने. तो रिलीज ऑफ CO2 क्या लिखा हम लोगों ने? बोथ because both were releasing CO2 and intaking oxygen. Both were releasing CO2 and intaking oxygen. Thus, the level of oxygen decreases. Level of oxygen decreases. Level of oxygen decreases. Causes death of mice. Causes death of mice. तो कौन मर गया? चूहा मरेगा. चूहे के मरने का दुख है, टंग गया तो दुख नहीं होता है. So many people are celebrating today welcoming of Lord Ram in Ayodhya. Yes, Papa. You all are also celebrating by wearing this white shirt, having this flag in the neck. It is very nice to celebrate ceremonies like this. अच्छे कपड़े पहनना, वहाँ का नाम लेना, बहुत अच्छी बात है, तो करना चाहिए. But this one day celebration से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट. बहुत सारी कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी. राम आएंगे तो आंगन से जाएंगे, दीप जला के हम दिवाली मनाएंगे. वाह, बहुत अच्छी बात है. वेरी नाइस टू डू ऑल दिस थिंग. आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखो तो पूरी जनता यही स्टेटस लगा के रखा है, राम आएंगे राम आएंगे. आ भी गए राम, बहुत अच्छी बात है. वी आर हैप्पी विद दिस. बट मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दीज थिंग्स इज टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग्स ऑफ द पर्सनालिटी. यस सर. व्यक्ति को बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के आने के बाद व्यक्ति जो कुछ बोलता है वो हम सुनना ही नहीं चाहते. हम करना अपने मन की चाहते हैं. तो व्यक्ति को हमने क्यों बुलाया? सिर्फ हमारे मतलब के लिए. Just because of a political agenda, because of just a geopolitical matter, just for election, for getting votes from public. If you are doing all this, then it is of no sense actually. तो इससे अच्छा है कि हम राम जी को बुलाए, लेकिन राम जी को कैसे बुलाए? By accepting what instruction Lord is giving. उन्हें जो इंस्ट्रक्शन है उनको जीवन में अपनाए. क्या राम भगवान खुश होंगे इस बात से कि हम लोग बैठ के मांस खाएं? बिल्कुल भी नहीं. He never appreciated that. Never appreciate. क्या राम जी इसके बारे में खुश होंगे कि हम लोग जाके सिगरेट फूके? Never. He will be never happy that we cause trouble to others. And himself, when Lord Ram came, he accepted the spiritual master. Who was the spiritual master? विश्वामित्र मुनि. विश्वामित्र मुनि आए थे दशरथ जी के पास बोलने के लिए, कह रहे मुझे तुम्हारे दोनों बेटे चाहिए. क्यों चाहिए? पूरे जंगल में बहुत सारे राक्षस हो गए मारने के लिए. तो की जरूरत है? वो बेचारे में छोटे से बच्चे दोनों हैं, राम और लक्ष्मण. मैं चलता हूँ क्या? मैं राजा हूँ, आप मुझे ले चलो. विश्वामित्र बोले नहीं, आई डोंट नीड यू, आई नीड योर चिल्ड्रन. मुझे अपने बेटों की आवाज है. एंड दे वेंट एंड दे सर्व लाइक एनीथिंग. यू रीड रामायण, आपको पता है कितना राम और लक्ष्मण ने पूरा दिन रात जाग के विश्वामित्र मुनि की सेवा की. इवन though he is himself Lord, but he is serving the spiritual master.
Yes or no? So he's so respectable person, and he's respecting others. Therefore, we call Ram as Maryada Purushottam Ram. Yes or no? So he knows the limits. Even though Mother Keke, he himself knows that there is so much of tragedy, कितना षड्यंत्र रचा गया मुझे बाहर निकालने के लिए. But even though he's humbly accepting, okay, this is what you want from me, I'll go, no problem. Bharat came running back. Oh, chalo chalo office chalo. No, I won't come. I've given my words to my father. So now I won't go. I will be in the jungle, forest for 12 years, 14 years. So what I want to say, in Ayodhya, if we see, what is the consciousness? Everyone is trying to serve the other person. भरत सोच रहे कैसे राम जी खुश रहे, लक्ष्मण सोचे कैसे राम जी खुश रहे, है ना? Everyone is thinking how we can please Lord Ram. They are not thinking about their own pleasure. They are thinking about the pleasure of Lord. Yes or no? But if you see Lanka, what is happening in Lanka? Ravana is thinking for his own pleasure. Shurpanakha is thinking about his own pleasure. So लंका में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, लेकिन अयोध्या में किसके लिए काम कर रहे हो लोग? दूसरे स्वार्थ के लिए काम कर, खुद के स्वार्थ के लिए काम नहीं कर. So this consciousness we must have. And even though we may not be able to go to Ayodhya, but if you are in this consciousness that I want to serve others, I want to help others, this conscious, if we are in this consciousness, we are in Ayodhya. Because the Dham is not limited to a geographical place. ऐसा नहीं कि वृंदावन सिर्फ यूपी के गांव में. No, Vrindavan is in consciousness. Wherever you are, you can manifest Vrindavan by your consciousness, by your behavior. So that is more important to accept how what teachings Lord is giving through the example. उसको शेयर करके उसको हमारे जीवन में कितना बड़ा जरूरी है. मुझे अपने माता पिता ने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, हम हमारे पेरेंट्स ने इंस्ट्रक्शन कितने से फॉलो कर पा रहे हैं. What our parents are telling us, are we able to really follow them? Are we grateful to our parents? भाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक पिताजी मुझे बोले गए, बोले मेरी बेटी ने मुझे बोला कि आपका तो फर्ज बनता है मुझे पढ़ाना. हम लोग इतना पैसा दे रहे हो, बेटी ने पिताजी ने बोला कि तो पढ़ाई करो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने तुम्हें तो पैसा खर्च किया है. बोले पैसा खर्च किया, ये कौन सी बात है पैसा खर्च? ये तुम्हारा फर्ज बनता है हमको पढ़ाना. इज इट गुड टू से योर पेरेंट्स लाइक दिस? नॉट एट ऑल. किसी पेरेंट ने अभी फर्ज नहीं मिला तुमको पढ़ाना. यू गो टू अमेरिका, 18 साल हो गए, चलो ये निकलो घर से, तुम्हारा खुद का जिंदगी भी हो, खुद का काम करो, हम तुम्हें कुछ नहीं देने वाले. So if our parents are giving us something, if they are helping us, we should have a lot of gratitude in our heart. कृतज्ञता होनी चाहिए हमारे पेरेंट्स को लेकर कि हमारे पेरेंट्स हमको अपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है. They are struggling their own lives, even though they may not have got these facilities when they were the students. आपके पेरेंट्स को इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं मिला होगा पढ़ने जितना आपको मिल रहा है. Yes or no? But they are giving their hard-earned money to you so that you can study well. So you should not have, you shouldn't have gratitude for them. है ना? अब वो हृदय में उनके लिए कुछ एक ग्रेटिट्यूड वर्ड समझते हैं सभी लोग. तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत होना चाहिए. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग ग्रेटिट्यूड? बस बहुत अच्छा किया आपने मेरे लिए, ऐसा बोल देना ही कुछ है क्या? नो. मीनिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड इज फर्स्ट यू शो योर ग्रेटिट्यूड थ्रू योर वर्ड्स. अपने शब्दों से अपना जो कृतज्ञता प्रकट करो कि थैंक यू आपने मेरे साथ कुछ किया. देन यू शुड एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड थ्रू योर चॉइसेस. You have two choices, to follow your friend and to follow your parents. Then whom do you follow? Parents. Because you have gratitude for your parents. Your friend will be saying, चलो घूमने चलते, but your parents saying, नहीं आज मत चलो, आज घर पर रहो, आज घर पर काम है. Then what you should do? Okay, friend, I will not come today because my parents are saying he want me to be there in the home. There are some services to be done. I will be there. I will not come with you. Friend is also a good person. I'm not saying friend is a bad person. Having friends is also a good thing, but you should have priority more on your parents. So you should show your gratitude through your choices, and then you should show your gratitude through your actions. You should understand कि जब मैं घर पे आता था तो भैया हमको मम्मी लाके पानी देती थी. If your father comes from outside, then you should also take some glass of water and give him. कि आप लोग बाहर से आपको भी पानी की आवश्यकता है. And if he is in some help, then you should be very eager to do that. If he needs some service, your mother needs some service in the kitchen, if your mother needs some service in the home,
नेचुरली इक्वली टू दैट। ऐसा नहीं है टीवी सीरियल चल रहा है मेरा अभी, साल की बहुत ही कुमकुम भाग्य, अभी क्लाइमेक्स आने वाला है, बस हम रुक जाओ फर्जी बाद में बनाएंगे हम, पहले हम क्लाइमेक्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या चलने वाला है। अरे मूवी आ रही है, अभी हम फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, अभी तुम्हारा सब भला काम जाए साइड में, हमारा काम इधर। तो इफ दिस इज द एटीट्यूड, do we have gratitude in our heart? If this is our attitude, no. Lord Ram gave up his whole kingdom. Can you imagine? कल आपको राज्याभिषेक होने वाला है, आपको प्रधानमंत्री बना जाने वाला है कल देश का, और आपको आपके फादर बोल रहे बेटा प्रधानमंत्री मत बनो, जाओ जंगल में रहो। पागला कब हो, जेल में डालो इसको। मेरे को बोल रहे कि प्रधानमंत्री को पद छोड़ के जाओ जंगल में। बट नो, यू आर सो हैप्पी, देयर वाज नो टिंज ऑफ इवन an anxiety for Ram to go to forest. Such a gratitude for his parents, even though he is Lord himself. दशरथ जी के पिताजी लॉर्ड राम है, मतलब एक्चुअल में लिखा है, he is father of everyone. But even though he is accepting someone as a father and playing the role so nicely, just to teach human beings like us that we should also be so humble, we should be so gentle, kind, and obedient in following our superiors, our seniors. If today you follow your superiors, your seniors, in future you will also become a senior. Yes or no? You will also have children. You will also go in some coaching and company wherever you will work. You will be a doctor. If you today follow, I guarantee you, tomorrow the subordinates which you will have, they will also follow you. Who is a great leader? The great leader is the one who is a very great follower. Without being a good follower, you cannot be a great leader. So therefore, if today you don't become a good, and practically I'm telling you, today if you don't become a good follower, a good student, tomorrow wherever you go, you won't be able to imbibe those qualities in you. Because training starts from today onwards. है ना, बच्चे को बचपन से पैर पढ़ना सिखाया जाता है ताकि बड़ा होकर पैर पड़ेगा। अगर उसको बचपन में पैर पढ़ना नहीं सिखाओगे, बड़ा होने के बाद वो कोई पैर नहीं पड़ने वाले, नेवर एवर। यू कैन नॉट टीच न्यू ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग, कहावत सुनिएगी आप लोग। एक नए कुत्ते को, पुराने कुत्ते को नई ट्रिक्स नहीं सिखा सकते। यू कैन नॉट बैंड अ बैम्बू व्हेन इट्स बिकम हार्ड। So therefore, when you are in a student life, qualities can be developed in this period only. Once you pass this time, when you become independent, you have your responsibilities, then to change and mold ourselves is next to impossible. It becomes very, very difficult. Because our mentality, है ना, बाल से पहले हमने ऐसे ही नहीं करे, ऐसे ही नहीं बड़े हो गए, है ना, so many dialogues people say. So therefore, student life, you all must learn these lessons from the Ramayana. है ना, पढ़ना चाहिए आप लोगों को समय निकाल, what these teachings are there. So of course, celebrating this way is very much appreciable. जोड़े जोड़े चिल्लाना जय सिया राम, जय सिया राम. Of course, the holy name has its own power. भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, वो शक्ति का सदुपयोग करना है, to bring change in our character. And this is for Lord Ram is known. बताइए और किसी भी जाने थे क्या भगवान? सब लोग भगवान राम को किस लिए जानते हैं? That because he was a person with all whatever in the world you see, all the best of the qualities in the character if you see, that is present in the Lord Ram. Even the Valmiki Muni, when he wanted to know about the person with 16 qualities, then Narad Muni came and told him, अरे तुमको इस 16 गुणों से संपन्न व्यक्ति चाहिए, धरती में भी जिंदा है। बोले कहाँ है? बोले जाओ, वहीं पर ही है भगवान श्री राम। और नारद मुनि ने 16 नहीं, 64 क्वालिटीज बता दी, इतने सारे गुण है भगवान श्री राम। And then he was shocked, oh my God, does a person exist? And then Brahmaji came and gave him the darshan of Lord Ram and said, now you start writing Ramayana. So always remember, celebration is always, otherwise what happens? Religion without philosophy is just sentimentalism. You all are following the religion, but without philosophy. Therefore, it is sentimentalism. What is religion? Religion means doing these rituals. हम जाते हैं अगरबत्ती घुमाते, ये करते वो करते, सब रिचुअल से अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कहानी बताना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, किस चेतना के साथ करना चाहिए, बट व्हाट कॉन्शियस वी शुड डू दिस.
And if you know the consciousness, the purpose, the reason behind that, then it becomes proper science. Otherwise, it is just sentimentalism. And if you just know the reason and you don't do it, so religion without philosophy is sentimentalism, and philosophy without religion is mental speculation. You are just sitting and doing the philosophical understanding, and you're not doing anything, it is just mental speculation. Everything is going in the mind. So you all are following religion very nicely. अब लोग सब धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म के पीछे करना है कारण क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस चेतना के साथ करना चाहिए. अगर आपको ये समझ में आ जाए, then what are you doing is very wonderful. It becomes a great science for everyone. And that you can teach others also in your life. Okay, we are celebrating this, but with this attitude we should serve. With this attitude we should celebrate. Then it becomes a real cause. Then it not only benefits you, it benefits others also, whosoever comes in your contact. है ना. अदरवाइज ये तो आज राम मना रहे हैं हम, अच्छी बात है. कल वहीं जाके हम शराब पी रहे, तंगड़ियां तोड़ रहे, ये सब कर रहे हैं. तो आज के सेलिब्रेशन का वास्ते तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं बना है ना. वही लोग जो आज राम जी के नाम पे जय श्री राम बजा रहे, वही लोग रामनवमी के दिन वो डीजे नगाड़ी बजाने वाले है ना. तो इससे वास्ते तो कोई फर्क आने वाला. हिंदू हिंदू के नाम पे ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड. बट इट इज नॉट ट्रू हिंदुइज्म, इट इज नॉट ट्रू. है ना. वो सनातनी, हर सनातनी की इच्छा पूरी हुई 500 वर्ष की, संघर्ष हो गया, ऑफकोर्स इट वॉज. बट इफ यू सी, पहले के समय में जब 1950 के समय जब ये संघर्ष चालू हुआ था, तब लोगों ने क्या किया था वहां पे मस्जिद के साथ में, दे वर डूइंग 24 आवर्स कीर्तन. नाउ ऑल्सो देयर आर रिकॉर्डिंग्स. 1960 के आसपास उन्होंने 24 आवर्स कीर्तन चालू किया था मस्जिद के बाहर. क्यों? ताकि उनका मंदिर चाहिए. तो उन्होंने ये तरीका नहीं अपना कि चलो लाठी उठा के मारते ही. They were praying to the Lord. If you desire so, that they be a temple. And for what they were, and for that, what they were doing, they were doing 24 hours कीर्तन. 24 घंटे वो वहां पे कीर्तन कर रहे थे, भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे और जो होना होगा वो हो जाएगा. So that was the right consciousness. That is the right attitude. And that we should. इसीलिए लोग लेक्चर रखा गया था, रखा गया ना रखा गया, ताकि हम राम जी के बारे में जाने आज के दिन. किनको फॉलो करना है हमारी लाइफ में. ही शुड बी अवर लीडर, हीरो. ही शुड बी अवर आइडियल इन अवर लाइफ. हम किसी शाहरुख खान, आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत या इन लोगों को अपने जीवन का आइडियल नहीं बनाए. इवन टुडे आई सी सुशांत राजपूत हैज पास्ट, और सुशांत सिंह राजपूत के अपीयरेंस डे पे, बर्थडे पे लोग, माय गॉड, दे क्राई लाइक एनीथिंग. वी हैड वन स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, मुझे इतनी याद आ रही सुशांत राजपूत की. जिस महीने उसका बर्थडे होता है उस महीने में सारी उसकी पिक्चर देखता रहता हूँ. तो for them, they have their hero and idol as these personalities, but leave them aside and make heroes not any Captain America, Iron Man, कोई ब्लैक पैंथर, कोई स्कूबी डूबी. ऐसे किसी को अपना हीरो बनाने से अच्छा भगवान श्री राम को हमारा हीरो बनाए. और हीरो मतलब क्या, जय सिया राम, बस छत्रपति महाराज की जय. हाँ ठीक है, अच्छी बात, वॉट एवर इट इज, वेरी गुड. वॉट यू फॉलो. हम कल गए थे, देखो गए थे हम लोग. तब पता होगा हाउ फोटो बना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज आ रहे हैं, तुकाराम महाराज को इतना सारा गोल्ड, इतना सब कुछ दे रहा, ऑफर कर रहे हैं. पर तुकाराम महाराज से, नो आई डोंट नीड एनीथिंग लाइक दिस. मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं है. आई एम अ बैकर, व्हाई आई नीड ऑल दिस थिंग्स. तो छत्रपति शिवाजी महाराज केम एंड ही ऑफर्ड हिज होल किंगडम टू तुकाराम महाराज. एंड तुकाराम महाराज सेड, ओके नाउ यू हैव गिवन दिस होल किंगडम टू मी, नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस किंगडम, now I give this kingdom back to you. Now you rule this kingdom on behalf of me as my servant. तो तुकाराम महाराज was a great personality. Went to वैकुंठ, हम लोग गए थे वैकुंठ गमन स्थान. आप लोग गए होंगे देहू के अंदर. Such a nice place. There is a tree also. You also there? From there he went to Vaikuntha, means he was a true devotee, pure devotee of the Lord. And under his guidance, Chhatrapati Shivaji Maharaj was running the whole world, whole kingdom. So even though he was such a great personality, but he was following the footsteps of a pure devotee. छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर रहे थे, तो was ruling under the guidance of a pure devotee. भगवान के भक्ति के निर्देशन में कार्य कर रहे थे. So whoever big, whatever qualities, skills he may have, we should be humble to accept the authority of our seniors. That is very needed, very needed.
Otherwise, when problems comes, nobody is responsible to take over responsibilities. So just knowing and hearing हम इस गांव से हम उस गांव से बहुत अच्छी बात है। और उससे ज्यादा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है those qualities should come in us even though you are from America और लंदन। आप लोग आइए मंदिर में, कितने सारे ब्रह्मचारी थे जो अमेरिका से, वर्ल्ड बेस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम में वो जूडो कराटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं टाइकन तो नहीं, पता नहीं वो भी फाइट जैसा कुछ उनका होता है। उसको फर्स्ट टाइम में उनका डैनी एटकिंस, सब लोग सर्च करते हैं गूगल पे, डैनी एटकिंस इज द वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन इन दैट, ही इज ब्रह्मचारी इन आवर टेंपल हियर। क्या आप जाकर मिल सकते हैं डैनी एटकिंस। डैनी एटकिंस, उसके यूट्यूब पर वीडियो, वो जैसे आप लोग जस्टिन बीबर को जानते हैं, सब लोग नहीं जानते, तो जस्टिन बीबर वेरी फेमस सिंगर, like that he is Danny Atkins, not singer, or the performance. Thousands of people come to book his show, but he has given up all these things and he is now becoming a monk and serving. So what I want to say, even though people have so many things in their life, but they are lacking satisfaction, happiness, but this only comes when we revive a relationship with the Lord. So we have to develop attachment for the Lord, not for anyone else. तो हम इतना ये सेलिब्रेशन चल रहा है, ये सब अयोध्या, ये सब कुछ चल रहा है ताकि हमारे हृदय में भगवान के लिए जगह बने। We develop our attachment for the Lord, not for anything material in this world. भगवान का संबंध रहेगा हमारा, तो वो हमारा संबंध इटर्नल रिलेशनशिप, relationship of this world are not going to be eternal for us. They will ultimately give us suffering and lamentation, hankering and lamentation, nothing more than that. But our relationship with Lord will give us real happiness and satisfaction. So these are learning in the VSA Academy. We are very fortunate. You will not learn all these things in Akash and Anand. Hare Krishna. हाँ तो लिखा हम लोगों ने जॉब से प्रश्न बहुत करता है। नेक्स्ट देखिए, दिन सेकंड सेटअप अभी अभी नहीं होगा, बाद में होगा वो चालू है। इन सेकंड सेटअप plant was added. In second setup, plant was added, which released oxygen and kept alive candle and mice. Plant was in second setup, plant was added, which released oxygen and kept alive candle and mice. Which kept candle and mice alive. तो प्लांट के ऐड करने से प्लांट ने बैलेंस कर दिया, and the plant was taking CO2 and plant was releasing oxygen, and therefore candle and mice both survive. नीचे लिखिए, thus oxygen is released in photosynthesis. Thus conclusion क्या आया कि ऑक्सीजन कब रिलीज होती है? Photosynthesis. Thus oxygen is released in photosynthesis, discovered in 1774 by this Joseph Priestley. ऑक्सीजन डिस्कवरी कब हुई थी? 1774 ही है ना, 1774 1774 oxygen was discovered by scientist Joseph Priestley. नेक्स्ट है वॉन इंजन हाउस। वॉन इंजन हाउस, इन्होंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर एक प्लांट रखा, प्लांट का नाम था हाइड्रिला, है ना। ये प्लांट का नाम क्या था?
हाइड्रेला। और ये प्लांट के ऊपर फनल वॉज केप्ट। और ये हाइड्रेला प्लांट पानी में उगता है। तो देयर वाज वाटर फिल्टर। ध्यान से सुनना सभी। तो सेटअप में क्या है, वी हैव हाइड्रेला प्लांट। हाइड्रेला प्लांट पानी के अंदर रखा गया, उसके ऊपर क्या रखा गया, ये फनल। जब ये पूरे सेटअप को, है ना, सनलाइट में रखा गया, तो देन दे फाइंड आउट कि यहाँ पानी में बबल जनरेट हो रहे हैं। क्या बन रहे हैं पानी के अंदर, बबल। लेकिन जैसे ही ये पूरे सेटअप को डार्कनेस में, मतलब जहाँ पर लाइट नहीं है वहां रखा गया, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, देन देयर वाज नो प्रोडक्शन ऑफ दिस बबल्स। लाइट है तो बबल्स आ रहे हैं, लाइट नहीं तो बबल्स नहीं आ रहे हैं। तो उनको ये पता था कि बबल्स से ऑक्सीजन क्या है, किसके बबल्स है, क्यों है कि पहले डिस्कवरी हो चुकी है कि फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो साइंटिस्ट को पता था कि ये हाइड्रिला प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किसके बबल्स बना रहा है, ऑक्सीजन के। किसके बबल्स है ये, ऑक्सीजन के। लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में ही आ रहे हैं। सनलाइट हटा दिया आपने तो ये बबल्स आ रहे हैं क्या, नहीं। इसका मतलब क्या चाहिए प्लांट को, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ फटाफट नोट कीजिए। इसमें को लिखा नहीं, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। कंक्लूजन, in the presence of sunlight, in presence of sunlight, oxygen bubbles are formed. Which confirm, sunlight is needed for photosynthesis. जैन इंजन आती है क्या, अच्छा। जैन, क्या हो गया, नो बटन मानते हैं साइलेंस। हाँ पेरेंट्स आ रहे हैं ना देवेश, आ रहे हैं ना, भाइया करता है, भाइया करता है। हमारे भैया में चल आयुर्वेदिक, कौन से कॉलेज, हाँ इंदौर से, सही में। I was in Insaur for 1 year। उसी के बाजू में आकाश का अकेडमी, वो कॉलेज के जस्ट बाजू, और उसी के सामने हम लोग रहते हैं। आपसे नहीं, कौन का सेंटर, हाँ? पूरे वर्ल्ड में इसका बेटर इंदौर। ठीक है, डायग्राम बनाया सभी ने। हरे कृष्ण।